जिसके अंतर्गत में मिनिमम 2500 to 2600 लोगों को लिम्स, कैलिपर, क्रचेज हम लोग प्रदान करते हैं। बीइंग फ्रॉम बिहार, आई थॉट इट इज़ माई प्राइमरी ड्यूटी टू provide some relief, some contribution to the migrant laborers. We have adopted 3 village school and 3 schools from Jayanagar side. Our PM, Mr. Narendra Modi, has 2 vision. He wants to double the farmer income within next 5 years and provide each house safe drinking water, 55 liter per person throughout the country. We want to be part of the mission of the government of India. That gives us the satisfaction. इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात कर रहे हैं अरविंद सलाम पुरिया साहब हमारे साथ हैं जो कि सुदर्शन पाइप के डायरेक्टर हैं और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारा इनका जो पाइप का काम है बहुत अच्छे क्वालिटी के बनाते हैं और दूसरी के सोशल वर्क बहुत करते हैं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं उनसे बात करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपका सुदर्शन पाइप है ये आपने कब शुरू किया? मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। मैंने अपना प्रोफेशन चालू किया बिहार में, पटना में। 87 से 2003 तक मैं प्रोफेशन में था। साथ साथ में 93 में हमने एक यूनिट लगाई थी सीवा पोलिटोस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। आज वो यूनिट रनिंग है और बिहार के अंतर्गत में नंबर 1 के ऊपर काम कर रही है। 96 में आई वाज इन द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जी ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। 2001 and 2002 I was the treasurer of Bihar Industrial Association. I was secretary of Bihar PVC Pipe Manufacturers Association from the year 1996 to 2003. I was in the Rotary also in Bihar. Rotary Patliputra, I was the secretary of Rotary Patliputra in the year 2000-2001. At the same time, I was secretary of the Patna Nagar Shakha, Bihar Prantiya Marwari Sammelan in 2000-2001. That time also we have done lots of social work in the Rotary. From very beginning only, I like to do some social jobs, social work. 2003, I have shifted to Bangalore, and we have set up one unit at Bomchandra, where we are manufacturing the PVC pipes, mainly column pipes. अच्छा। In fact, in India or you can say throughout the world, we are the second producer of the column pipe. Okay. These pipes are used for the borewell purpose. In fact, this is the replacement of the GI pipe. Sudarshan column pipe can go up to 14 feet to 18 feet deep borewell to draw the water with pump size of 20 HP, 30 HP, 40 HP pump. The government of India, our PM, Mr. Narendra Modi, has 2 vision. That farmer income, he wants to double the farmer income within next 5 years and provide each house safe drinking water, 55 liter per person throughout the country. You can say Mahत्वाकांक्षी Yojana of the PM, that each citizen of the country should get the safe drinking water, and each farm should be properly irrigated and should have the water. For these 2 purposes, we have set up this unit, SDP and drip. For the irrigation purpose, most required things is water, and use the water very conservative way, because the water is the most scarce commodity. If you use the water generally for your farm,
you need 10 times more water than if you use scientifically your water to produce your crop. It requires 10 times less. So if you use the drip system, sprinkler system, water consumption goes less, your production goes up. Your productivity goes minimum 3 times to 4 times up with 1/10 of water. Government of Karnataka this year have the budget of 11,000 crore for the irrigation project. The water drawn from the dam or water drawn from the particular place to the field, it is done by the SDP pipes. Most SDP has been throughout the world, it has been found that SDP is the best material for the transportation of the water because it's a high density polymer. It is the replacement of the DI pipe. Okay. It is the replacement of the GI pipe. It is the replacement, partly replacement of the even PVC also. So there is no wastage of water from the dam to the crop. जी. There is no wastage of water. All comes through the piping system. इसमें पानी बचता है. इसमें पानी 1/10 लगता है. जो पानी जनरल लगना चाहिए उससे 1/10 लगता है. और आपका जो प्रोड्यूस है that goes up by 4 times, 3 to 4 times, because crop needs accurate water. It does not need more water or less water. Even the more water is also harmful for the crop. Less water it will not produce. So it needs moderate as per the need of the crop, quality of the crop. You need the water. All the Israel field, a small country produces much more than a bigger country due to their high technology, this drip irrigation system only. They have developed a drip irrigation system for each and every farm. तो सर ये 1 एकड़ में अगर इस टाइप का पूरा सिस्टम लगाना है तो रफली कितना पैसा लगता है? In 1 acre it arounds 50 to 60,000 rupees. What the central government is having, Pradhan Mantri Kisan Sinchai Yojana. Under this scheme, government gives the subsidy to the farmers. Okay. Under this subsidy scheme, most of the places government gives 75% or 90%. Total cost of 60,000 rupees is there per acre. Government will give you 75%, 40,000 rupees. 45,000 rupees, 15,000 rupees has to be paid by the farmers. Okay. तो सर ये जो आप बताए कि करीब 50 से 60 हज़ार रुपये लगता है 1 एकड़ में, एक बार लगने के बाद इसका लाइफ टाइम कितने दिनों तक चलेगा? It should work minimum 7 to 10 years. Okay. अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा मिशन है जल संचय योजना. जी. Governments are doing fantastic jobs under this scheme. What is the scheme? Just I will elaborate within 2 seconds. Under this scheme, the water is drawn from the source, either from the borewell or from the river or from the dam. Then water is collected at particular place. There you have the filtration plant where you do the filtration of the water, so it becomes the safe drinking water. From the filtration plant, it again gets distributed, goes to the villages, panchayat, and from villages it comes to the villagers' home, just outside the villagers' home. From there, this SDP pipes are getting connected with the MDP pipes, and it comes to each house of the village. So each citizen gets the safe drinking water. We manufacture PLB ducts also. We have the sprinkler system also. So we want to be part of the mission of the government of India. सर ठीक है, ये जो आपने डिटेल दिया, आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं अपने कंपनी में. आप ये चीज़ जो है जो गवर्नमेंट का योजना है उन लोगों के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको सप्लाई करते हैं. We have already supplied more than 20 crore rupees material to the government of Bihar contractors. And all pipes are tested before dispatch by the CPET. CPET is the
recognized body of the government of India. They comes to the factory. We have in-house laboratory where they do all testing as per the IS. Before dispatch, it should pass all testing so that the life of the pipe will be very high. करेक्ट, ये आपकी अपनी प्राइवेट बॉडी है, डेफिनेटली आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आप जो भी परीक्षण है उसमें पास भी कर जाएंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डाउन द लाइन जितना आप बाजार बता रहे हैं योजना, दिखाई नहीं देता है कि अब मटेरियल वहाँ से आपसे मैंने A1 क्वालिटी की मटेरियल ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, क्या लगता है डाउन द लाइन ऐसा हो सकता है वहाँ पे लोग चीज़ों को इधर से उधर कर दें, नहीं लगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं? No. I will say, government of all the state government have put a clause on the contractor that whatever you do, you have to maintain also. Minimum 5-year maintenance has been given to the contractor. So 90% of contractors take care that they use the right material only. Otherwise, they will be in a problem. They will be either blacklisted or their payment will get stopped. So the situation is different nowadays. That everybody wants to use the good quality material, and definitely the result will come जी to you. तो अरविंद जी, आपने जो पूरा डिटेल दिया, मतलब योजनाएं बहुत अच्छी हैं, अगर ईमानदारी से काम हो तो बहुतों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ठीक है सर, आपसे आप बात करते हैं कि आपके सोशल जो लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नीडी को, तो इस लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या क्या किया है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। बेसिकली मैं रोटरी इंटरनेशनल, एक वन ऑफ द बेस्ट NGO इन द वर्ल्ड, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी 14-15 में आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी बेंगलोर पीनिया, जिसके अंतर्गत में हम लोग एक आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में गणेश बाग के अंतर्गत में, कर्नाटका में, बेंगलोर के अंदर। और ये लिम्ब कैंप लास्ट 20 ईयर्स से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, जिसके अंतर्गत में मिनिमम 2500 to 2600 लोगों को लिम्स, कैलिपर, क्रचेज हम लोग प्रदान करते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब आपको हम बताएं कि लॉकडाउन के अंतर्गत में हम लोगों ने क्या किया या हमारी कंपनी ने क्या किया। संयोग की बात है कि मुझे एक जैन समाज के लोगों से संपर्क हुए और उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया कि भाई वी कैन प्रोवाइड यू पैक्ड फूड, दैट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ राइस। वी हैव परचेज फ्रॉम देम, डिस्ट्रीब्यूटेड in Bomchandra industrial area as well as Davasbet industrial area. Food packet has been given at Tumkur toll Naka to the COVID warriors, nurses, doctors, police, even our DSP has also taken it. Then with the PDO of the Davasbet Panchayat, we have distributed ration packet that was containing rice, wheat, dal, ghee, salt, complete food, complete ration packet for 10 days of 4 members family. It was around 13 to 14 kg packet. Okay. 300 family, mainly the laborers have got the benefit. Thereafter, being from Bihar, I thought it is my primary duty to provide some relief, some contribution to the migrant laborers. We have provided 1700 migrant laborers who were traveling from Bangalore to Bhagalpur. Food packet that was containing sattu, chuda, salt, sugar, onion, biscuit, mask, soap, because with 2 liters of water. That food packet quantity was such that one person can eat 3 times for 4 days. और रास्ते के सफ़र के हिसाब से आपने बनाया? हाँ, it was because we Bihari eat sattu
with just you put water, salt, and green chili, it becomes your food. Chura, you would put water and sugar, it becomes your food. So it was a ready cooked food with them for 4 days. This we have provided to 1700 people, and we are going to give 115 patient of Victoria Hospital 4 chapati at 3 o'clock every day for next 3 months. ओके, तो वो आज से शुरू हो रहा है। Today we are starting at 3 o'clock. अच्छा, In our club, Rotary Bangalore Prime, we have adopted 3 village school and 3 schools from Jayanagar side. In that village school, we have built the toilets and water facility. ओके, In town, we have provided all are the government schools. We have provided them the complete sports dress. Sarla College is there in Jayanagar. There we are going to give tally training. 3-month course, 30 students. We have already taken 2 batches, 3rd batch is going on. And our duty is, we just see that all the students who passed out the graduation, they get the employment also. ओके, That is our focus area. Out of 60 students, more than 50 students have got the job. That gives us the satisfaction. अच्छा। तो ये थे अरविंद सलामपुरिया साहब। तो हम लोगों को पता चला कि इस लॉकडाउन में और रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उसी की जानकारी के आधार पे हम यहाँ आए थे। तो पता चला कि ये पाइप में भी काफ़ी अच्छा लीड करते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, मैंने आप तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच गिविंग इन्फॉर्मेशन। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much watching Indian Media Book. Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.